Hello students, in this video lecture, I would like to again to explain to you how to prepare the financial statement of a banking company with completely new problem and with new adjustments which I have not covered in previous problems. Let me show you these adjustments first. Now we have to transfer here a sum of rupees 8,000 to dividend equalization reserve. Now we will see what is the accounting treatment of any outstanding expense, and we have outstanding audit charges which are outstanding. Then we will discuss how to adjust, how to make adjustments in the investment value when the directors wants to show their investments at market value, and what is the accounting treatment when interest on doubtful debt is included in interest and discount received. So let's begin. But before that, let me remind you the two important rules of transferring the particulars from trial balance to financial statements, that is balance sheet and profit loss account. The rule number one is that if any ledger has a credit balance in trial balance statement, then such a ledger would be either income or liability. अगर किसी ledger का ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस है तो वो लेजर एक तो लाइबिलिटी हो सकता है या फिर इनकम हो सकता है. And at the same time, if any ledger has a debit balance in the trial balance statement, then such a ledger would be either asset or expense. अगर किसी ledger का ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस है तो वो लेजर एक तो असेट हो सकता है या फिर एक्सपेंस हो सकता है. Okay, now the first particular in the problem is fixed deposit accounts, second is current deposits, and third is saving deposit accounts. Now we know that these three are bank's liability, and we should show these liabilities under schedule 3, which is specifically meant for it, that is deposits. So schedule 3 deposits, we will record these under schedule number 3 deposits. So you can see here fixed deposit accounts, current deposits, and saving deposit accounts with their values. Okay, the next in the problem, now we have here share capital and the balance is 5 lakh. Now it has credit balance. Being a credit balance, we know it is bank's liability, and we have schedule number 1, that is capital, and we will show it under schedule number 1 capital. So here bank's liability, share capital rupees 5 lakh. Now in total there are 5,000 equity shares and each share is paid at rupees 100. So 5,000 into 100 it becomes 5 lakh rupees. Now the next in the problem, we have share premium account. Now it has also credit balance and it is bank's liability, and we will show it under schedule number 2 reserve and surplus. Actually it is the opening balance of share premium account. Now actually this account is created when shares are issued at premium by an entity. Okay. The next in the problem is investment at next particular in the problem is investment at cost. The value is 2,35,000, and we know that there is one adjustment related to it, and its number is 6. Now here the directors decided to show the investments at market value of rupees 1,90,000. Directors ने decide किया है कि इस शेड्यूल को मिस असेट को, दैट इज इन्वेस्टमेंट को, शेड्यूल नंबर 8 जो है इन्वेस्टमेंट का, वहां पे मार्केट वैल्यू से दिखाना है. इसका मतलब फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी हैव टू कंसीडर 1,90,000. So let's go to schedule number 8, that is investments. In inner column show the cost price, that is 2,35,000, and as per director we have to show it at rupees 1,90,000 rupees. Now you can see there is a depreciation in the value of investment. Now let's calculate the depreciated value. So from 2,35,000 we will deduct 1,90,000. So the depreciated value is, oh, something went wrong, I'll do it again. From 2,35,000 we have to deduct 1,90,000 rupees. So the balance is 45,000. So this is the depreciation in the value of investment, that is rupees 45,000 rupees. Okay, as of now I'll not explain to you how to provide this second effect. I'll explain to you its effect as times come in the problem. So 45,000 is the depreciated value of investment. Okay, now the next in the problem is interim dividend. Okay, interim dividend paid is 18,000. Interim dividend paid is 18,000.
but we have one adjustment of it, that is interim dividend declared. Now as per this adjustment, the value of interim dividend declared is 4% of paid up capital, whereas paid up capital is 5 lakh. I have prepared one working note of it. I'll show to you. I would like to show it to you. Now this is working note number 2. देखो यहाँ पे actually जो dividend भी paid होता है ना, it is always paid as per the rate of dividend and on paid up share capital. Now in the problem, paid up share capital is 5 lakh and rate of dividend is 4%, and 4% of 5 lakh is 20,000. Therefore, the declared dividend is 20,000. So that much dividend is declared to the shareholder, but actually distributed dividend is only 18,000. Paid dividend is only 18,000. It means unclaimed dividend value is rupees 2,000. Now we all know that the dividend is nothing but an appropriation of profit. So in profit loss account, here see appropriations. Here we have to show the value of dividend declared, that is rupees 20,000, and the 2,000 dividend unclaimed becomes bank's liability, क्योंकि वो अभी तक के पे नहीं हुआ है लेकिन पे करना है. That's why it is bank's liability, and we have to show it under schedule number 5, other liabilities and provision. Here rupees 2,000, this is unclaimed dividend. And how did we calculate it? From interim dividend declared, that is 20,000, we have deducted interim dividend paid. So here from rupees that is from rupees 20,000, we will have to we have deducted rupees 18,000, which is paid, which is actually paid. So this is unpaid, this is unclaimed dividend. Okay, now the next in the problem is, okay, the next in the problem is, next particular is dividend equalization reserve. It has a credit balance, and we all know that it is bank's liability, and all the reserves we record under schedule number 2, that is reserves and surplus. So we will show it in schedule number 2, reserve and surplus. Okay, it is opening balance, it is opening balance. Okay, balance is 32,000. Okay, 32,000 rupees. Look here, I have shown the balance 32,000 rupees, dividend equalization reserve under schedule number 2, reserve and surplus. But there is one adjustment, we have to transfer this year 8,000 from profit to dividend equalization reserve. Okay, when we will close profit loss account, that time we will transfer rupees 8,000 of profit to dividend, from profit to dividend equalization reserve. Okay, but as of now, I have shown its opening balance in the schedule number 2, that is reserve and surplus. Okay, the next in the problem is the profit loss account as on 1st April 2019. यहाँ पे हमें opening profit का figure मिला है, and it has a credit balance, and we know it is income of a bank. Actually, it is previous year's income of a bank. So we will show that balance. We will show that balance in profit loss account here. Profit brought forward rupees 40,000. Now next is the problem is statutory reserve. Now we all know that it is mandatory for every banking company incorporated in India to transfer at least 25% of its current year profit to statutory reserve before declaring any dividend. It is necessary. It is statutory for every banking company incorporated in India. Now it is bank's opening balance of statutory reserve, and we will show that balance in schedule number 2, reserve as surplus. So you can show that balance in inner column, either show it in inner column, but it is better to show that balance in inner column only, because we have to add this year's 25% of current year profit. So balance, I think it is 40,000. Yes, it is 40,000. So I'll show that balance here, 40,000 rupees. Okay, rupees 40,000. This is the opening profit of a statutory reserve. Okay, the next in the next particular is investment fluctuation fund. Now this is important. This is important. Now it has a credit balance. Now what do you mean by investment fluctuation fund? Now let me tell you first, fluctuation means changes, and this fund is created due to the changes made in the value of investment. For example, this year also, what is the cost price of investment? 2,35,000.
but at what price it was decided by director to show in the schedules? 1,90,000. So that much change is made in this year in the value of investment, and this fund is created only to adjust the changes which are made in the value of investment. First of all, show that balance in schedule number 2, that is reserve and surplus. So schedule number 2, reserve and surplus. So here investment fluctuation fund, I think the balance is what is the balance? 70,000 rupees, no? So 70,000 rupees. Now schedule number 2, reserve and surplus, uh, investment fluctuation fund, 70,000 rupees. 70,000 rupees. Now let me tell you the other effect of depreciated value in investment. अभी अभी मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्रिएट किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में जो भी एप्रिसिएशन होता है या फिर जो भी डेप्रिसिएशन होता है वाइल रिवैल्यूइंग इट अगेन, तो वो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हमें एडजस्ट करना है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। एक्चुअली वो एक एडजस्टमेंट अकाउंट ही है जो कि एडजस्ट करता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को। तो यहाँ पे देखो 235 ओरिजिनल 2,35,000 इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस है, और डायरेक्टर के हिसाब से हमें उसे 1,90,000 दिखाया है, जो कि हमने दिखाया भी है यहाँ पे 1,90,000। इसका मतलब वहाँ यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई है, कम हुई है। कितने से कम हुई है? 45,000 से कम हुई है। अगर ये 45, तो ये 45,000 हमें कहाँ से एडजस्ट करना है? वी हैव टू एडजस्ट इट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो फंड है इसको डिडक्ट करना पड़ेगा बाय 45,000 रुपीज। यहाँ से हमें 45,000 रुपीज वी विल एडजस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 45,000 रुपीज। तो 70 में से 45 गए तो बचा कितना? सो 70,000 minus 45,000, so 25,000 rupees is the adjusted value of is the new value of investment fluctuation fund. इट इज इम्पोर्टेंट, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा यही एडजस्टमेंट। देखो, अगर प्रॉब्लम में डायरेक्टर के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट को नई नए प्राइस पे दिखाना है, तो जो भी नए प्राइस की वजह से जो भी एप्रिसिएशन होने वाला है इन्वेस्टमेंट के प्राइस में, जो भी डेप्रिसिएशन होने वाला है इन्वेस्टमेंट के प्राइस में, हमें वो एडजस्ट करना है एडजस्ट करना है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। नाउ आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। सब चलो मान लो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड प्रॉब्लम में दिया ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो प्रॉब्लम में कहीं पे दिया ही नहीं। दैट टाइम व्हाट वुड यू डू? दैट टाइम इफ डायरेक्टर डिसाइड टू शो द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तभी भी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है ना शेड्यूल नंबर 8, यहाँ पे हमें नई वैल्यू दिखानी पड़ेगी। दैट इज जो भी होगी। इन केस लेट से इसी प्रॉब्लम में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? 235 इनर कॉलम पे दिखाएंगे, 190,000 कैलकुलेशन पर्पज के लिए कंसिडर करेंगे। जो भी 45,000 का लॉस हुआ है वो लॉस हम दिखाएंगे शेड्यूल नंबर 14 में, यहाँ पे दिखाएंगे शेड्यूल नंबर 14 में। और कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे लॉस दैट इज रिवैल्यूएशन on investment, revaluation, loss on revaluation of investment, revaluation on investment, ऐसा टाइप ऐसा लिखेंगे अपन। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे हम 45,000 दिखाएंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑलरेडी दिया है, इसके लिए ये इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। ये इफेक्ट कब आएगा यहाँ पे? अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो आएगा। और लेट मी टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और वहाँ पे उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो मान लो कि ज़्यादा है या फिर कम है, लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमें हमेशा हमेशा बुक वैल्यू ही कंसिडर करना है, मार्केट वैल्यू कंसिडर करना नहीं है। तो अगर मार्केट वैल्यू दिया भी है प्रॉब्लम के अंदर, तभी भी बुक वैल्यू ही कंसिडर करना है। मैं किस सिक्योरिटीज की किस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ? जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की गई है, वहाँ वो इन्वेस्टमेंट हमें बुक वैल्यू से ही दिखानी है, मार्केट वैल्यू से नहीं दिखानी है। ओके, now this part is over, this adjustment is over. Okay, now the next in the problem is premises less depreciation 4,04,000. Now we have schedule number 10 for it, so I'll show it under schedule number 10, that is fixed asset. Here premises less depreciation 4,04,000. Okay, the next is furniture less depreciation, the value is 40,000. It will go under schedule number 10 only, that is fixed asset. So here furniture less depreciation
40,000 rupees. Now the next in the problem is, next particular is depreciation on bank's asset. It has a debit balance, it is bank's expense, so we will show it under schedule number 16, operating expenses, depreciation on bank's assets. Now the next in the problem we have here interest paid. The interest paid value is 75,000, it is bank's expense, and interest related expenses we record under schedule number 15, interest expended, so it will go under schedule number 15, interest expended. So here 75,000 rupees. Next particular in the problem is interest and discount received. So it is bank's income, it has a credit balance. Being a credit balance, we can say that it is bank's income, and we have to show it under schedule number 13, interest earned. Next is director fees. Now it has a debit balance and it is bank's expense, and for recording expenses other than interest paid we have schedule number 16, so it will go under schedule number 16. So let's show it under schedule number 16, director fees. Okay, now the next is deposits with Reserve Bank of India. Now it has a debit balance, it is bank's asset, and we have one specific asset for it, that is cash and balances with RBI. We will show it under schedule number 6, cash and balance with RBI. So here 3,10,000. Now the next particular in the problem is cash in hand. It will be shown at the same place only, under same schedule only. So schedule number 6, cash and balances with RBI. So here again 3,40,000. Okay, next particular in the problem is stationery and printing. Now it has a debit balance, and we know it is bank's expense, and we will record it under schedule number 16, operating expenses. Now here printing and stationery. Okay, the next particular in the problem is rent, taxes and insurance, salaries. Now these two are also bank's expenses, and we will record these two under schedule number 16 only, operating expenses. Now rent, taxes and insurance and salaries. Okay, next is unexpired discount. Now this is important. Now it has a credit balance. Unlike previous problems, in previous problems we always had a adjustment of rebate on bill discounted. Rebate on bill discounted means what? Unexpired discount. यहाँ से पहले भी जितने हमने प्रॉब्लम देखे हैं उस हर एक प्रॉब्लम में अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट जो भी था वो एडजस्टमेंट एज एन एडजस्टमेंट आया था, लेकिन इस प्रॉब्लम में ये आया है इन ट्रायल बैलेंस. अगर ये ट्रायल बैलेंस में आता है तो इसका मतलब क्या होता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? Then let me tell you, as it has appeared in the trial balance, it means what? The whatever amount of an unexpired discount, that is rupees 4,000, it is already deducted from interest and discount account. मतलब हम क्या करते थे, जब भी ये एडजस्टमेंट में आता था तो हम शेड्यूल नंबर 13 जो है इंटरेस्ट अर्न, वहां से इस फिगर को माइनस करते थे, और माइनस करने के बाद हम इसे दिखाते थे कहाँ पे? शेड्यूल नंबर 5 में अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में दिखाते थे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट को, मतलब रिबेट ऑन डिस्काउंटेड. ये और यहाँ पे क्या हुआ है, ये एडजस्टमेंट में नहीं आया, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आया है. जैसे ही ट्रायल बैलेंस के अंदर आया है तो इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी इट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम शेड्यूल नंबर 13. इट मींस द एंट्री फॉर रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट अप टू द अमाउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट इज ऑलरेडी पास्ड, और वो एंट्री पास करने के बाद ही ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आया है. इसका मतलब क्या है कि हमें इसको फिर से शेड्यूल नंबर 13 में माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, वहां से शेड्यूल नंबर 13 से ऑलरेडी माइनस हो चुका है. तो इसे हमें दिखाना है शेड्यूल नंबर 5 में दिखाना है, दैट इज अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट रुपीज 4,000. इसे हमें दिखाना है शेड्यूल नंबर 5 के अंदर. खाली इसका एक ही इफेक्ट आएगा, इसको 13 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी माइनस किया है, इसी की वजह से वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आया. इसका मतलब क्या है, अगर ट्रायल बैलेंस में अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट आता है तो उसे माइनस करने की जरूरत नहीं है 13 से, शेड्यूल नंबर 13 से, खाली आपको उसको दिखाना है शेड्यूल नंबर 5 के अंदर.
और मुझे और आपको एक बात बतानी है। चलो मान लो कि यू हैव द सेम पर्टिकुलर इन द प्रॉब्लम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है लास्ट ईयर या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अगर ऐसा आता है प्रॉब्लम के अंदर एज एडजस्टमेंट में आता है या फिर प्रॉब्लम के अंदर आता है कि ट्रायल बैलेंस में आया अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट ब्रैकेट में आया कि लास्ट ईयर का है या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में ये पिछले साल अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट था। इसका मतलब क्या? ये पिछले साल उसको अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट बोला है तो क्या? तो ये इस साल का इनकम पिछले साल ही ये डिस्काउंट किया गया था। लेकिन ये पिछले साल का अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है। इसका मतलब ये इस साल का इनकम है। तो इस साल के इनकम में इसको हमें शेड्यूल नंबर 13 में ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आता है कि ब्रॉट फॉरवर्ड या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर या फिर लास्ट ईयर का है या फिर एडजस्टमेंट में भी आता है लास्ट ईयर का है करके ऐसा आता है, तो दैट टाइम we have to add it in schedule number 13 interest earned. Okay, now next है let me check whether I have shown it shown it in schedule number 5. Yes, मैंने दिखाया है. Okay. Now the next in the problem is legal expenses. The value is 3 lakh, sorry, 39 3900, that is 3900. ओके, लीगल एक्सपेंसेस ये बैंक का एक्सपेंस है, हमें इसे दिखाना है शेड्यूल नंबर 15 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सो लीगल एक्सपेंसेस अमाउंट्स रुपीज 3900. ओके, द नेक्स्ट पर्टिकुलर इन द प्रॉब्लम इज डिपॉजिट्स विथ अदर बैंक. नाउ डिपॉजिट्स विथ अदर बैंक है 2,05,000. नाउ इट हैज अ डेबिट बैलेंस. तो ये क्या है? असेट है. तो असेट है तो कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा 7 में, बैलेंसेस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल इन शॉर्ट नोटिस. 7 में जाएगा डिपॉजिट्स विथ अदर बैंक. सो 2,05,000. ओके, नेक्स्ट है बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड. इट इज बैंक्स एडवांसेस. सो इट विल गो टू शेड्यूल नंबर 9. Bill discounted and purchased 54,000 rupees. Next in the problem is we have here bills receivable being bills for collection. अभी आपको दिखेगा यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस भी दिखाया है और क्रेडिट बैलेंस भी दिखाया है. ये कैसे हो सकता है? आपने पहले भी कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा, आई डोंट नो, बट हियर यू कैन से दैट सर हाउ इज इट पॉसिबल द सेम पर्टिकुलर हैज डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि एक्चुअली ये अकाउंट है ही नहीं. ये बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट एक्चुअली एक सर्विस है जो बैंक प्रोवाइड करती है. जो भी बंदे बैंक के थ्रू परचेस एंड सेल्स करते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है बैंक बिल्स फॉर कलेक्शन. अगर आपको ये मालूम नहीं है बिल्स फॉर कलेक्शन क्या है, देन यू प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस, theoretical videos where I have explained this concept bills for collection in detail. और आपको खाली इस बार मैं ये बताना चाहूँगा एक्चुअली इसका रजिस्टर बनता है बैंक के अंदर, और रजिस्टर के अंदर जो भी बिल्स बैंक्स ने कलेक्ट किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर फॉर कलेक्टिंग द अमाउंट्स फ्रॉम इट्स बायर्स, मतलब क्लाइंट के बायर्स से जो भी अमाउंट कलेक्ट करने हैं उसके जो बिल्स बैंक ने कलेक्ट किए वो एक्चुअली रजिस्टर में दिखाया जाता है, वो लेजर में नहीं आता. तो एज वो लेजर में नहीं आता वो रजिस्टर में दिखाया जाता है. तो खाली आपको फुल बना लेने के लिए, आप खाली उल्लू बनाने के लिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम में इसका डेबिट बैलेंस भी दिखाया है और इसका क्रेडिट बैलेंस भी दिखाया है. इसका डेबिट बैलेंस भी दिखाया है और इसका क्रेडिट बैलेंस भी दिखाया है. 1,77,000 एंड 1,77,000. ओके, सो खाली इसको हमें एज अ फुट नोट जो भी बैलेंस शीट है यहाँ पे, लेट मी शो यू हियर, वी हैव टू शो दैट वैल्यू 1,77,000 रुपीज़, 1,77,000. हाँ, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना. ये बिल्स फॉर कलेक्शन है. इट इज शोन हियर in the balance sheet as a footnote. Now see, as a footnote, bills for collection. Okay, next in the problem is owing by foreign correspondents. Now it has a debit balance. Now the question is what do you mean by what is owing by foreign correspondents? ये आपको मालूम होना चाहिए एक्चुअली ये क्या है, लेकिन इसका डेबिट बैलेंस है और हमें मालूम है अगर किसी लेजर का डेबिट बैलेंस है तो वो लेजर इधर असेट हो सकता है या फिर एक्सपेंस हो सकता है. अभी आपने कभी सुना है क्या ऐसा कोई एक्सपेंस, इस नाम का कोई एक्सपेंस ओइंग बाय फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स? तो नाउ यू कैन से दैट सर हमने तो कभी सुना ही नहीं है कि ऐसा कोई एक्सपेंस होता है. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट डेफिनेटली इट इज बैंक्स असेट. लेकिन खाली तुक्का मारने से नहीं चलेगा. यू शुड नो कि फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स होता क्या है. दैट आई एग्री दैट इट इज बैंक्स असेट, लेकिन होता क्या है ओइंग बाय फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स? आपको मालूम होना चाहिए कि फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स अकाउंट नाम का एक अकाउंट होता है जो बैंक ओपन करती है
अदर फॉरेन, मुझे भी फॉरेन के बैंक वहाँ पे ओपन करती है और उस अकाउंट में इस बैंक ने पैसे रखे हैं। कितना रखा है पैसा? 21,000 रुपीज़ का पैसा रखा है। तो ये टेक्निकली जाएगा कहाँ पे? जाएगा शेड्यूल नंबर 7 में, बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। लेकिन ये अकाउंट होता क्या है? इस अकाउंट का बेनिफिट क्या होता है और ये अकाउंट क्यों ऑपरेट करती है बैंक्स? एक्चुअली बैंक से अकाउंट ऑपरेट करती है टू फैसिलिटेट इंटर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। जो भी कंट्री टू कंट्री ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए बैंक्स क्या करती है, दूसरे देश के बैंक्स में ये फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स अकाउंट नाम का एक अकाउंट ओपन करती है। तो ये वो चीज़ है और इट विल गो अंडर शेड्यूल नंबर 7, दैट इज बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल इन शॉर्ट नोटिस। सो ये यहाँ पे आएगा 21,000 रुपीज़, बैलेंसेस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल इन शॉर्ट नोटिस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है वी हैव हियर बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स। नाउ इसका बैलेंस है क्रेडिट और वी नो दैट इट इज liability of a bank, and for recording these types of liabilities we have schedule number 4, that is borrowings। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे इसको 61,000। उसके बाद नेक्स्ट है वी हैव कमीशन एक्सचेंज और एंड इट हैज़ क्रेडिट बैलेंस और हमें पता है कि ये बैंक का इनकम है और बैंक का जो भी इनकम है अदर देन इंटरेस्ट वो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास शेड्यूल है 14 अदर इनकम। तो ये इनकम हमें यहाँ पे दिखाना है कमीशन एंड एक्सचेंज वाला 1,42,000। उसके बाद नेक्स्ट है वी हैव हियर लोन्स कैश क्रेडिट नो डेब्ट। इसका बैलेंस है डेबिट और इसे हमें दिखाना है शेड्यूल नंबर 9 में, that is advances। So I'll show it under schedule number 9 advances। So loans cash credits and overdrafts 6,37,300। now I think I'm done with the particulars। Okay, now let's discuss in detail all the adjustments। Okay, first I'll discuss first with you the effects of adjustment number 3, audit charges are outstanding to the extent of 5,000 rupees। इसका मतलब क्या है कि जो भी financial year 1920 उसका जो भी audit हुआ है financial data का, उसका जो भी ऑडिटर ने चार्ज लगाया है दैट इज ₹5,000 एंड विच इज आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब कि वो अभी तक पेड नहीं हुआ है लेकिन इट इज एन एक्सपेंस ऑफ अ बैंक and though it is paid or not paid, so we should consider it under schedule number 16, that is audit charges, and these audit charges are outstanding। The figure is 5,000 rupees, the figure is 5,000 rupees। audit charges outstanding। Okay, the next is now it is outstanding, it means it is not yet paid, it is payable. As it is payable, this outstanding audit charges becomes bank's liability and we must show it in schedule number 5, that is other liabilities and provisions। Here outstanding audit charges rupees 5,000 rupees, rupees 5,000। now the next now we are done with this adjustment। now the next is we have to make a provision for taxation reserve and doubtful debts। okay, let's make the provision of it। let's show it under provisions and contingencies first। Here we have to show the both here in under provisions and contingencies। the provision made for bad and doubtful debt is rupees 32,000 and the provision made for taxation reserve is 38,000। okay, now the next effect of bad and doubtful debt, we know that from advances we should deduct rupees 32,000 and that is schedule number 9। so schedule number 9 here in less doubtful debts and the figure is actually we have to deduct that figure from here 32,000। so 32,000, 32,000। okay, and the next effect of taxation reserve we have to show under schedule number 5, that is other liabilities and provisions। so provision for taxation reserve 38,000, if I am not mistaken it is 38,000 but I'll check again, I'll see whether it is 38,000 or not, but yes, 38,000। okay, now
38,000. So I'm done with this adjustment also. The next is bank has accepted on behalf of customers bills worth rupees 1 lakh against the securities of rupees 1,80,000 lodged with the bank. Actually, it is bank's contingent liabilities. It is known as acceptances, endorsements and other obligation. It is bank's contingent liability जो जाएगा शेड्यूल नंबर 12 में. So schedule number 12, acceptances, endorsements and other obligation. The accepted value is 1 lakh. So 1 lakh rupees. Okay, the next is now this is important. Okay, interest on doubtful debt is rupees 7,500 is included in interest and discount received account. Let me tell you, the bank's advances, so whatever loans given by a bank, I mean to say advances, are classified in two categories, that is performing assets and non-performing assets. And performing assets and performing advances are those advances on which bank is timely receiving interest. And NPA, that is non-performing asset, means what? On this asset bank is not generating any income, it means bank is not receiving interest. And when the bank is not receiving interest on any asset, on any advances, then such a asset is treated as a non-performing asset or doubtful debt. And in this case the interest is to be recognized when it is actually received. Means interest is not to be recognized on a due basis. I mean to say, in case of performing asset, we can consider income on a due basis, whether it is actually received or not received. But in case of non-performing asset, the interest is to be recognized when it will be received in cash. और यहाँ पे क्या दिखाया है कि डाउटफुल डेट जो है जहाँ पे हमें इनकम को रिकॉग्नाइज करना है, इंटरेस्ट को एज अ इनकम रिकॉग्नाइज करना है. कब करना है? जब वो एक्चुअल में मिलेगा. यहाँ पे नहीं मिला है, वैसा नहीं दिखाया. यहाँ पे क्या दिखाया है कि डाउटफुल डेट पे इंटरेस्ट चार्ज किया है और वो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में दिखाया है, जो कि बैंक नहीं कर सकती. तो फिर बैंक को क्या करना पड़ेगा? जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड में जो इनकम दिखाया है 7500 का, वो वहां से माइनस करना पड़ेगा. और वो एट द सेम टाइम इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम शेड्यूल नंबर 9 advances also. So let me show you the effects of it. First, from interest शेड्यूल नंबर 13, इंटरेस्ट अर्न, यहाँ से माइनस करना है हमें 7,500 को माइनस करना है. और सेम अमाउंट को माइनस करना है हमें शेड्यूल नंबर 9 से, एडवांसेस से. एक्चुअली मैंने जो थियोरेटिकल लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं उसके अंदर मैंने ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन किए कि क्यों माइनस कर किया या शेड्यूल नंबर 9 से क्यों माइनस करना चाहिए और वहाँ पे भी क्यों माइनस करना चाहिए. आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस पार्ट in my theoretical lectures, so you kindly please go through the theoretical lectures, so you will get the idea why the interest on doubtful debt is deducted from advances, as well as why it is deducted from schedule number 13, that is interest earned. यहाँ से भी क्यों माइनस किया, then you will get the idea of it. Okay, now the only remain particular is adjustment is transfer rupees 8,000 to equity equalization reserve. रिजर्व का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट का पार्ट है. रिजर्व मतलब क्या? प्रॉफिट का पार्ट. रिजर्व मतलब क्या? प्रॉफिट का पार्ट. यानी कि प्रॉफिट से हमें 8,000 रुपये निकालना है और 8,000 रुपये भेजने पर ट्रांसफर करना है. कहाँ पे करना है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को करना है. तो उसके पहले सबसे पहले हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हमें शेड्यूल्स को क्लोज करना पड़ेगा 13, 14, 15, 16. तो लेट्स क्लोज द शेड्यूल्स. सो 2,40,000 minus 7,500, so 2,32,500. तो यहाँ पे आई विल राइट 2,32,500. ओके, उसके बाद शेड्यूल नंबर 14 है. 14 के अंदर खाली एक ही इनकम है, दैट इज कमीशन एंड एक्सचेंज. तो 1,42,000. तो यहाँ पे आएगा 1,42,000. ओके. उसके बाद शेड्यूल नंबर 15 है. यहाँ पे हमारे पास खाली एक ही फिगर है 75,000 का, वो खाली यहाँ पे ऊपर आएगा 75,000 रुपीज. देन वी हैव शेड्यूल नंबर 16. लेट्स ऐड ऑल दिस फिगर्स एंड एडिशन फिगर इज 1,44,700. तो यहाँ पे आएगा 1,44,700.
1,44,700. चलो 2,32,500 है यहाँ पे। उसके बाद 142 है, वो भी है। 75,000 है क्या? ओके, एंड 1,44,700, 1,44,700. now provisions and contingencies इसका टोटल है 70,000. so here I will show rupees 70,000 rupees. यहाँ पे 70,000 आएगा. okay, now let's calculate the total. Let's calculate the total income, that is 3,74,500. let's make the addition of expenditures, that is 2,89,700. let's calculate the current year income. It is simple. now from the total of income, we have to deduct only the total of expenditure. We will get the net profit of current year, that is 84,800. now that 40,000 is previous year's profit. now 84,800 is current year profit. now 1,24,000 is bank's total profit as on 31st March 2020. now let's now here we have adjustment. No, what is the adjustment? now we have to transfer rupees 8,000 to dividend equalization reserve. but before making any appropriation of profit, we have to transfer 25% of current year profit to statutory reserve. so let's transfer first current year 25%. that is, what is current year profit is 84,800 to statutory reserve. So that balance is 21,200. so out of 84,800 we will transfer 21,200 to statutory reserve. then we will transfer 8,000 to dividend equalization reserve. let me show you the adjustment one more time. See, the adjustment is we have to transfer rupees 8,000 to dividend equalization reserve. now go to reserve and surplus account. now here dividend equalization reserve, here show 8,000 rupees. 8,000 rupees. now after transferring 8,000 rupees to dividend equalization reserve, its opening balance is 32,000, and after adding over there another 8,000, it will become rupees 40,000. the closing balance of dividend equalization reserve will be rupees 40,000. now statutory reserve opening balance is 40,000, and we have to transfer. We have transferred how much? 21,200 out of profit to statutory reserve. so 21,200. so 21,200. okay, I'll show you one more time. look here, 21,200. I have transferred 21,200 from profit loss account to statutory reserve, 21,200. now its opening balance is 40,000. now after adding over there 21,200 in 40,000, its new balance would be rupees 61,200. 61,200. now let me show you now let's close the profit loss account. now the 1,24,800 is the total profit. 1,24,800 is the total profit, and out of that profit we have transferred 21,200 to statutory reserve, 8,000 to dividend equalization reserve, and we have decided to pay a dividend of rupees 20,000 as per the problem. so let's calculate the or balancing figure of profit loss account, and which will be carried over to balance sheet. so from 1,24,800 we will deduct 21,200. then we will deduct 8,000, then we will deduct 20,000. so the balance carried over to balance sheet is 75,600. okay, I will show you one more time. see, from 1,24,800 I have deducted 21,200, which is transferred to statutory reserve. then I deducted 8,000, which is transferred to dividend equalization reserve. then I deducted 20,000, which is declared for the dividend, for the payment of dividend. so 75,600 is the balance which will be carried over to balance sheet. and let's show that balance here. 75,600. no, here in schedule number 2, reserve and surplus, 75,600. I'll check one more time. 75,600. yes, 75,600. and what is current year profit? 84,800 is the current year profit. so 84,800.
sorry, here 84,800. So 21,200 current year profit. Of that profit, 21,200 is a 25%. Okay. Now, now the profit loss account is closed. Now let's finalize the balance sheet. But before that, we need to close all the schedules of balance sheet. Let's begin with schedule number 1. So it will close with the balance of rupees 5 lakh. So the summary of this schedule is 5 lakh, and we will post that summary next to schedule number 1 under the column of current year. So 5 lakh rupees. Now schedule number 2, let's make addition of schedule number 2. So here in total we have these 3 figures, no 4 figures. Now the 2 lakh 11,800. So here 2 lakh 11,800. Now the schedule number 3, deposits. So here we have 3 figures and its total is 13 lakh 40,000. So here we will show 13 lakh 40,000. Borrowings. Now schedule number 4, borrowings. Now 61,000. There is only one figure, 61,000. So here 61,000 rupees. 61,000 rupees. Now schedule number 5. We have schedule number 5. Here we have 4 uh, figures and its total is 49,000. So here we will show rupees 49,000. Now let's add all these figures to find out total liabilities. So it is 21 lakh 61,800. Now let's close all the schedules one by one under the category of assets. So the first one is schedule number 6. Its total is 6 lakh 50,000. So here we will show 6 lakh 50,000 rupees. 6 lakh 50,000 rupees. Now schedule number 7. Schedule number 7. Its total is 2 lakh 26,000. So here 2 lakh 26,000. So 2 lakh 26,000. Now schedule number 8, investments. Schedule number 8, investments. Now there is only one. Its value is 190,000. 1 lakh 90,000. So here 1 lakh 90,000. Okay, the next is advances. Advances. Okay, here we have 2 figures to add and 2 figures to deduct. So 54,000 plus 6 lakh 37,300 minus 32,000 minus 7,500. So 6 lakh 51,800. I'll again do it. So I'll first add this figure with this figure, and from that figure I'll deduct 7,500 along with 32,000. So 6 lakh 51,800. So this is right. 6 lakh 51,800. Number 9, 6 lakh 51,800. Number 9, 6 lakh 51,800. Number 10, fixed assets. So here number 10, fixed assets, we have 2, 4 lakh 44,000. So here we have 2, 4 lakh 44,000. So 4 lakh 44,000 in next to schedule number 10, fixed assets. Now we have other assets. One more is there, other assets, schedule number 11. Okay, it has a nil balance, so nil. And contingent liability 1 lakh. So contingent liability 1 lakh, and other asset has a nil balance. Now I'll add the assets figures. Now 21 lakh 61,800. Now you can see here the total of liabilities matches with the total of assets. This problem is over. This problem is over. This is your tallied balance sheet, and this is the profit loss account of this bank. Thank you.